Very good morning, students. I hope that you all are well at your home. So, students, let's start our English class. Let me share your ebook. So, in our last class, we had completed the chapter reading of this chapter 8. The dragon called Tsunami. We read that chapter yesterday. And today I'll explain this chapter in front of you all, and after that I'll explain the question and answer. And if we'll get sufficient time, then we can complete exercise as well. So the name of this chapter is A Dragon Called Tsunami. So this story is from Japan, a country often known as the land of earthquake. This story is from Japan country, which is also called a land of earthquake. Minor earthquakes, at least it is recorded that at least 5,000 minor earthquakes comes in a year, per year there. So Gombe lived there. He was quite used to earthquakes because in a year there are minor earthquakes. Are the quantity, the amount of minor earthquakes were 5,000 around. Minor earthquakes comes there. So that country just is used to with those earthquakes. Mansi, on your camera. But today it was little different. As he looked towards the sea, something happened that time. Let's find out what happened. Oh, how horrible, how terrible, shouted Gombe as he rushed out of his hilltop house, shaking with fear. His house was at the top of the hill somewhere, and his house was just shaking. And he was saying that, he was shouting like, how terrible. The earthquake was over in less than a minute. Gombe lived on a very small island off the coast of the main island of Japan. There was an earthquake, that's why he was shouting, how terrible. So वो जो earthquake था वो less than a minute में खत्म हो गया. 1 मिनट का भी नहीं था वो earthquake, और वो चला गया. थोड़ी देर के लिए shake हुआ घर और वो चला गया earthquake. तो गोम्बे एक छोटे से स्मॉल विलेज में रहता था, द कोस्ट ऑफ द मेन आइलैंड ऑफ जापान में एक मेन आइलैंड में कोस्ट था. कोस्ट मींस सी शोर, मतलब सी शोर के पास में जो जगह रहती है उसको कोस्ट बोला जाता है. So he was quite used to the earthquakes. वो earthquakes से बहुत familiar था कि earthquakes आते रहते हैं उसके country में, उसके city में. But this time the tremor was very powerful and had lasted longer than usual. मतलब इस बार जो earthquake था वो बहुत powerful था. Even now the weird rumbles echoing from the bowels of the earth were really terrifying. इस बार जो आवाजें आ रही थी earthquake की वो बहुत ज्यादा terrifying थी और ज्यादा भयानक थी. Like so awful. Gombe looked down uneasily at village nestling below the hill. उसने देखा हिल के नीचे जो लोग रह रहे थे वहां पर. It seemed that all people were so busy in their fields preparing for harvest festival. जो लोग थे सब लोग busy थे वो harvest festival को celebrate करने के लिए preparation कर रहे थे, and they had not even noticed the quake. और लोगों को पता भी नहीं चला कि कब earthquake आया छोटा सा और वो चला गया. Then Gombe looked towards the sea and gasped, horror-stricken, to see that wind was blowing in the wrong direction. It was blowing from the land and towards the sea. तो उसने देखा कि जो sea की तरफ जो आवाजें आ रही है लहरों की वो बहुत ज्यादा भयानक है, और जो wind है वो wrong direction में चल रही है. It was blowing from the land towards the sea. वो land से sea की तरफ जा रही है wind. Oh, God, help us. Tsunami is coming to destroy us, shrieked Gombe as heavy gale wind swept from the shore, hurling the waves away from the beach, revealing the sandy waste and black rocks that had covered by the ocean water. So he was thinking that कि एक बहुत भयानक सुनामी आने वाला है, तो हमें भगवान बचाइए, God, please help us. He was just shouting. जिस उसको आभास हो गया था कि कोई सुनामी, कोई बहुत तूफान आने वाला है बड़ा सा. It will shallow the whole village in one gulp. यानी कि एक ही बार में, एक जैसे हम लोग पानी पीते तो ऐसे करते हैं ना, one gulp.
So in a one gulp it will shallow the whole village. वो पूरे विलेज को shallow कर लेगा, मीन्स खा जाएगा, पूरे एक विलेज को अच्छे से खत्म कर देगा. In a one gulp, एक ही लहर में, like. So Gombe thought, Gombe ने सोचा. Rushing into his little house, वो अपने घर के तरफ दौड़ के गया. He ran out again holding a flame torch in a of pine wood. Pine wood का एक torch था, वो लेकर आया बाहर. On the hill in front of his house lay tall stack of rice straw piled high, ready to be stored away in the barn. तो बार में रखने के लिए जो राइस का स्ट्रॉ था, जो चावल बनते हैं, चावल के जो जिससे चावल निकलते हैं, तो उसका स्ट्रॉ रखा हुआ था जो बार में रखना था. I will lose everything, my house, harvest will all die, thought Gombe, but I must save the villagers whatever the cost. तो Gombe ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, मेरा गांव भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में, व्हाटएवर द कॉस्ट, मुझे अपने गांव को, अपने विलेज को सेव करना है. और सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं दैट सुनामी इज कमिंग. सो agony of fire and fear twisted his stomach. उसको बहुत ज्यादा घबराहट के कारण उसको पेन जैसा होने लगा बॉडी में. His leg trembled, but his hand was steady as he thrust the fairy torch into the shack of rice straw. उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, and his legs were just trembled, means उसके लेग भी शेक कर रहे थे डर के कारण कि अब सुनामी आने वाला, अब हम लोग क्या करेंगे. So his hand was steady, मतलब उसका हाथ बस steady था, his hand was not moving, his hand was steady and holding that fire torch. मीन्स आई थिंक एक लकड़ी में उसने आग लगा के रखी थी, तो वो हाथ में रखा था बस, उसने हिलाया नहीं अपना हाथ को. एंड उसने क्या किया, उसको फेंक दिया. किसमें, जो राइस के स्ट्रॉ रखे थे, जो राइस के जो घास रखे थे, बहुत सारे चावल के जो रखे थे सूखे हुए घास, उसके घर के पास में थे, जो बार्न के अंदर रखना था. तो ही जस्ट थ्रो दैट ऑन दैट राइस स्ट्रॉ ताकि वो जले. In a second, the flames caught and spark leaped up like frightened fireflies fanned by the swiping wind. हवा भी बहुत तेज चल रही थी, तो बहुत जल्दी ही आग पकड़ लिया. वो जो स्ट्रॉ रखी थी, पूरी स्ट्रॉ में बहुत जल्दी आग लग गई. A dry, brittle rice stacks, crackling, red-hot flames flying up like fairy tongues, hissing, destroying. तो बहुत जोर से आग निकलने लगी, बिल्कुल रेड हॉट फ्लेम्स निकलने लगी उससे. बहुत जल्दी ही आग लग गई वहां पर, क्योंकि हवा बहुत तेज थी. Now all the tall stacks were aflame like gigantic torch. वो जो जितने भी स्टॉल रखे थे, बहुत सारा स्ट्रॉ रखा था, घास फूस रखी थी, एंड जिसका दाना रखा था, दाना चावल जो रहते हैं, जो लगते हैं ना खेत में, तो सूखे हुए रहते हैं, तो वो बहुत सारा बना के उसने रखा था अंदर स्टोर करने के लिए, लेकिन वो पूरा जला दिया उसने. वो एक जाइगेंटिक यानी कि बहुत विशाल टॉर्च के जैसे, बहुत बड़े टॉर्च के जैसे वो जलने लगा. Gombe dropped the pine torch. Gombe ने अपने pine torch को भी फेंक दिया. For a moment he stood still and if he was lost in a terrible nightmare. He was thinking like मैं कोई सी बहुत भयानक सपना देख रहा हूँ. उसने खड़े-खड़े ये सोचा देखकर. Way down at village temple, bells pealed out loudly, clearly. Fire, fire. नीचे विलेज में अचानक से सब लोगों ने बहुत जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया. फायर, फायर, आग जल रही है, आग जल रही है. Gombe's house is in fire. Gombe का हाउस फायर में है, जल्दी आओ इधर. सब लोग गांव वालों को उधर ऊपर बुलाने के लिए सब लोग फिर आवाज लगाने लगे. Some youngster among the village raised up the hill. सब जो भी यंगस्टर्स थे वो जल्दी जल्दी दौड़ के हिल के पास गए जहाँ पे गोम्बे का घर था. Then came another man, women and children. तो इसके बाद धीरे धीरे सब men, women, children सब उसके घर की तरफ जाने लगे जो आग लग गई थी उस पे हेल्प करने के लिए. To Gombe, however, as he stared down impatiently, they seemed to be crawling up irritatingly slow like a line of ants. Gombe ने देखा नीचे हिल से कि सब लोग एक जैसे लाइन में ants चलती है ना, उस तरह से सब लोग एक एक करके उसके पास में आ रहे हैं. And at last a group of boys clambered up to where Gombe was standing and they started putting out the fire. तो उन्होंने कहा कि जो कुछ बॉयज आए ग्रुप में, उन्होंने गॉम्बे को किनारे किया और कहा कि अब हम इस फायर को बुझा देते हैं. तो गॉम्बे roared, leave that alone, call all the villagers to come quickly here and here. तो गॉम्बे बहुत जोर से चिल्ला के बोला, इसको रहने दो, मत बुझाओ, leave that alone. सब जितने विलेजर्स हैं उनको बुलाओ ऊपर, जल्दी यहाँ पर बुलाओ, फास्ट. The villagers came more and more. सब विलेजर्स आते गए, running, leaping, falling.
to get at the top of the Gombe's hill. बॉम्बे के हिल में जहाँ पे घर था बॉम्बे का, वहां पहुंचने के लिए सभी विलेजर्स धीरे 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 वहां पहुंचने लगे. बॉम्बे ran from one person to another. बॉम्बे एक के बाद देखा उसने कि सब लोग आ रहे हैं. He shouted out their name. सबका नाम वो जोर जोर से बोल रहा था. He counted them eagerly one by one. सबको उसने एक एक करके one by one काउंट भी किया. सब लोगों ने सोचा कि बॉम्बे मैड हो गया कि हैज बॉम्बे गोन मैड, कि बॉम्बे मैड हो गया क्या, उसका क्या हो गया. सभी आपस में फुसफुसा रहे थे, धीरे धीरे आवाज में बात कर रहे थे. They whispered. Whisper means धीरे धीरे स्लो आवाज में बात करना. They stared at his burning house. सब लोग उसका घर देख रहे थे, जलता हुआ सा घर जल रहा था, राइस स्टॉक्स जल रहे थे. Then at his face, और उसका फेस देख रहे थे. Suddenly Gombe turned, shouting with all his strength, look look, here it comes the dragon. Suddenly फिर बॉम्बे ने पीछे मुड़ के देखा और उसने जोर से आवाज कहा शाउट करके, that look here it comes the dragon. वो देखो ड्रैगन आ रहा है. Everyone turned to see where he pointed. जिस तरफ बॉम्बे इस तरह से पॉइंट कर रहा था, फिंगर अपनी इस तरह से दिखा रहा था जोर से, सब लोगों ने उस तरफ देखा. Then everyone find out that place far away on the distant horizon, where a faint line, a thin black, seemed to rise a throw in the sky. मतलब उन्होंने देखा कि जो हॉरिजॉन था, हॉरिजॉन मींस जहां पर लैंड और स्काई दोनों मिल जाते हैं, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन. तो उनको दिखा हॉरिजॉन के पास में कि बहुत तेज कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, बादल आ रहे हैं, तूफान जैसा आ रहा है. विद इन सेकेंड इट ग्रो इनॉर्मस. कुछ सेकेंड्स में ही वो एकदम बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया, इनॉर्मस. filling up the entire sky and rushing towards them in a tremendous speed. वो पूरा स्काई भर गया उस आवाज से, उस ब्लैक क्लाउड से, उस तूफान से, और वो बहुत स्पीड में इनकी तरफ आ रहा था. सब लोग फिर everyone screamed, सुनामी सुनामी, सब स्क्रीम करने लगे जोर से, तो सुनामी है, सुनामी, भागो भागो. Before they were their very eyes, the entire ocean rose up and up, higher and higher, touching the sky like a massive black dragon, hurtling upon the beach with a tremendous exploding roar. So tsunami, tsunami, everyone screamed. After that, they all saw that entire ocean is covered with that जो तूफान था उससे पूरा ओशन जो था वो कवर्ड हो गया था. एंड हायर इट इज ग्रोइंग अप, वो बहुत बड़ा होते जा रहा था वो तूफान. टचिंग द स्काई लाइक ए मैसिव ब्लैक ड्रैगन, जैसे कोई ब्लैक ड्रैगन हो उस तरह से वो स्काई को टच कर रहा था वो जो तूफान था. अपॉन बॉम्बे's hill the people leapt back. सब लोग बॉम्बे के हिल में ऊपर और जाने लगे आराम से, वहीं पर रहने के लिए, बचने के लिए. For a few terrifying blinding moment, except for the foamy water mist, nothing else could be seen. सिर्फ पानी के छोटे छोटे बूंदे दिखने लगे थोड़ी देर के बाद में, और कुछ नहीं दिख रहा था बस. Then they saw the tsunami. तब उन लोगों को सुनामी दिखा, like an insane untamed force. तो अचानक से सुनामी जब उनके पास में आया, बहुत ज्यादा तेज फोर्स था जो अपनी तरफ खींच के ले जा रहा था, कहीं भी उड़ा के ले जा रहा था. तो sweep violently over their entire village. उनका पूरा विलेज जो था वो पूरा साफ हो गया. Again and again it hurtled over their homes and fields twice and thrice. उनके घर को, उनके जो फील्ड्स थे उनको पूरा खराब करके बर्बाद कर दिया वो तूफान ने. The villagers looked down, bewildered, staring dazedly at their devastated house, their devastated village that had been scooped out and flung back at the gigantic waves. Gigantic waves आए थे सी से, वो उनके विलेज को पूरा खराब कर दिया था. और सब जो विलेजर्स थे बहुत कंफ्यूज थे कि ये सब क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है. The fire of the rice sack, fanned by the wind, burned the flare again. It cast a warm red glow on the villagers, making them slowly aware that their lives had been spared only because of it. Humbly thankfully, holding their eyes, they bowed before the courageous Gombe. So जब उन्होंने फायर की तरफ देखा तो जो राइस स्टॉक है वो पूरे जल रहे थे. एंड उन्होंने कहा कि सभी जो विलेजर्स थे वो बहुत थैंकफुल थे, किसके, बॉम्बे के. तो उन्होंने हाथ जोड़ के बॉम्बे को थैंक यू कहा कि आज हमारी जान सिर्फ बॉम्बे के कारण बच पाई है, कि उसने अपना घर भी जला दिया और अपने राइस स्टॉक्स भी जला दिए, जो भी उसके राइस स्टॉ रखे हुए थे तो वो पूरे उसने जला दिया हमारी सबकी जान बचाने के लिए. नहीं तो अभी हम सब लोग तो नीचे विलेज में होते और फिर तूफान आता है हमको सब डिस्टर्ब करके चला जाता, हम लोग कोई बचते नहीं.
लेकिन बॉम्बे ने अपना घर जला दिया ताकि हम लोग अवेयर हो, हम उसके टॉप ऑफ द हिल के पास पहुंच सके और उसने हमको बचा लिया. Understand? So this is the story I explained in front of you all, and the message you will getting here, you can see. Message is a hero is someone who thinks about others before thinking about himself or herself. Understand? हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है. अंडरस्टैंड? वही हीरो कहलाता है. अगर आप अपने बारे में पहले सोचते हैं तो आप हीरो नहीं है. If you are thinking about, firstly you are thinking about another one, then अगर आपके पास एक रोटी है खाने के लिए, but someone is here, जो कोई आपके गेट में आ रहा है, उसको भूख लग गया है, and he is thinking कि मुझे भी मिल जाता खाना, and आप तो खाना खा लिए, तो you can give to them. Understand? So we have to take care of each and every person around us. सबका ध्यान रखना important है to become a good person. Now move to the exercise. Well, these two questions you all have to do by yourself. I hope you all can do it. What is tsunami? So students, you all have to do, you all have to find out the answer of these questions and write it down on your notebook. Understand? And you have to make sentence of the word which are given here. Make sentences of the word which are given here by yourself. Now move to the tick the correct option. What was the main occupation of the people living in the village? Tell me. Ma'am. Yes. Ma'am, farming. Farming. An agony of pain and fear twisted his pain. What did he feel the pain? Why did he feel the pain? उसको वो पेन उसने क्यों फील किया? Ma'am, he was scared. Ma'am, he was scared. Yes, Ma'am, he was scared. He was Ma'am, he was he scared. felt sad that he was would scared. lose all his rights. That means, wait, Ma'am, even. wait, that means, what does that means? Okay, let me tell you the answer. The answer of this question is, he felt sad that he would lose his eyes, all right. Why? अब जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, या हमारी कोई चीज चली जाती है, या कोई चीज जाने वाली होती है, हमको अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत दुख होता है. इसके कारण कहीं हमारे कभी हमारा स्टमक एक होगा, कभी हेडेक होने लग जाता है हमको टेंशन के कारण, कभी हमें बेटर फील नहीं होता है. Understand? So these types of symptoms our body feel. Why? When we are feeling that something is going to lose, कोई चीज जाने वाली है, ऐसा जब हमको फील होता है, then हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन या कोई हेडेक या फिर स्टमक है या फिर चक्कर या फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, we are not feeling better because of all these things. Understand? Yes, ma'am. Why did the villagers race up the hills? To put off the fire, to see what was happening, in fear, to save themselves. What is the answer? Ma'am, To put ma'am, to put off the fire. Yes. To put off the fire. जो fire था उसको बुझाने के लिए सब villagers hill की तरफ भागे थे, uphill. So as I already sent you question and answers on your WhatsApp group. है ना, WhatsApp group में मैंने सारे question answer send कर दिए हैं. So you can write down. Let me show you that. Let me show you all the question answers which I sent you on your WhatsApp group. Here are the answers and questions.
These are the word meanings. And and here you can see the question and answer. These are think and answer, read and answer, and what question. I already shared on your WhatsApp group. There was a slight mistake happened, which you can see. In place of your chapter's name, class 3rd is written. So you can do correction in that. Yesterday I sent you this. So do correction. Let's move to the exercise of this chapter. Sarthak, put your mobile phone somewhere properly. Don't hold it on your hand. अपने हाथ में अगर इस तरह से रखे रहोगे then it will make you disturb. है ना? Put your mobile phone properly somewhere. So students, I hope that in page number 99 this exercise is, you all can do this exercise easily. Neeta, Okay, ma'am. this is from, you can take help from page number 164 and complete this exercise by yourself. Infinitives, underline the infinitives in these sentences. The photographer asked the child to smile sweetly. I really want to go to London, but I don't have enough money for the ticket. She agreed to stitch my dress by Monday. Ajit has planned to visit his grandparents tomorrow. So here you can see the infinitives are smile, underline smile. I really want to go to London to go. She agreed to stitch. Ajit has planned to visit. To smile, to go, to stitch, to visit. They all are infinitives. I hope you all have done. Move to the next exercise. Fill in the blanks with the correct word from the box. Don't forget to add to. Here we have to add to. Don't forget to add to. A patient visited a doctor. The doctor asked him dash down. What is the answer? Wait. To sit down. To sit down. Then he asked him to describe. To describe his illness. The patient said, I don't know how to tell. You. Wherever I touch my finger, it hurts. The doctor asked the patient dash down. To lie down. To lie down. He began to examine. The doctor asked the patient dash his finger. To put his finger. His finger on the area of the body that hurt. The patient did it and screamed every time he put his finger on his body. The doctor got up and began. The doctor got up and began to smile. He said, there is no need to worry. It is a finger that is broken.
डॉक्टर सेड दैट आपका फिंगर है वो ब्रोक हो गया है, आपके बॉडी में कहीं पेन नहीं है, दैट ही सेड. I hope that you all have completed. Move to the next exercise, phrases. So phrases is a group of word that makes some sense but not complete sense. A phrase that does not have a verb. So here you can see example is on a chair. So phrase क्या होते हैं? They are group of words that make sense but not complete sense, and they don't have verb. So let's pick the correct phrase. A girl on the bike, in the bike is my sister. On the bike or in the bike? On the bike. Huge waves rushed on the shore, towards the shore, towards the shore. My mother bakes delicious buns, delicious foods, bakes is written, that's why delicious buns. I borrowed this book in the library, from the library. My Mr. Sharma goes to walk every morning for walk. So I hope that you all have done this exercise as well. To move to the next exercise and read the passage taken from the Alice in Wonderland and underline the phrases. So I hope that you all can do this exercise easily if it is taken from the underline the phrases. You just have to underline the phrases. Okay, let me complete this exercise for you all so that it will be helpful. The king and queen of hearts were seated on the throne. A great crowd assembled around them, all sorts of little birds and beasts. Little birds and beasts, they all are phrases. Whole pack of cards. The knave was standing before them in chains, with a soldier on each side. To guard him near the king was the white rabbit, with a trumpet in his hand and a scroll of parchment in the other. So I hope that you all completed this exercise also. Move to the next exercise. Oh. Fill in the blanks with the phrases of your own and complete it. Jatin and Nitin are going to the movie. Full stop. The vendor is carrying a bucket on his hand. A bucket. On his hand. They sent the letter to the chief editor. The baby kangaroo sits in the porch of its mother. Excuse me, ma'am. Yes, Srishti. Excuse me, ma'am. Yes, Srishti. Ma'am, what will be the first one? First one. Ma'am, what is the answer of first one? Answer of fourth is in the pouch of his mother. In the pouch of his mother. The kangaroo baby is in the pouch of his mother. So next two exercises are left. If you can do them. No, first one. Here, this one, the C exercise.